The upcoming panel discussion will address challenges and opportunities for sustaining Nepal's young workforce. The focus will be on improving education and training to equip youth with relevant skills for the job market. The discussion will also explore how collaboration between public, private, and civil society sectors can create a more inclusive and prosperous future for Nepal. Does World of Work, building a resilient future for youth in Nepal. I'd like to call upon the panelists in alphabetical order. Mr. Binay Khadka, CEO, Khalti. Mr. Mahesh Patrai, Member Secretary, Council for Technical Education and Vocational Training, CTE VT. Ms. Najesh Bano, State Project Manager, Bihar Rural Livelihoods Mission, Bihar Jivika, Bihar Government, India. Now, in order to moderate the panel discussion, I'd like to welcome the moderator of the panel discussion, Mr. Ravindra Bahadur Singh, Team Leader, Helvetas, Swiss Intercorporation, Nepal. Everyone. So this is a very young audience today, and there is a very popular, and I would say of unfortunate narrative among the youths in Nepal. कि नेपालमा के पनि छैन. So there is no future in Nepal. So that's why यो विदेश जाने कि नजाने भन्दा पनि कहिले जाने is the question. It's not just the matter of, it's just a matter of when rather than why. So as my friend earlier highlighted, so the objective or the focus of the discussion would be like, so first we'll try to understand the rhetoric and reality behind this narrative. So that has been built among the youth, and we'll try to see how much of the rhetoric the narrative has and how much of the reality so this narrative hold. And then we'll try to understand and discuss the skills so that the youth in Nepal need to really build a resilient livelihood or the resilient future in Nepal, and also the thrive in the globalized world. And then finally, then we'll also try to discuss what the government and the private sector need to do so to provide the youth in Nepal with the skills, the 21st century skills. So we have a very interesting panel today. So we have a representative from the World of Work, so which Mr. Binay represent. So he is a CEO of the Khalti. And then we also have a representative from the World of Education. So we have Mr. Mahesh Patrai, the Member Secretary of CTE VT. And we also have Najis, so who bring in a lot of experience on career guidance, and the career guidance bridge the world of education and world of the employment or the work. So I have 4 questions for each panelist. So you will have 3 minutes maximum to answer the question. And then we'll have some time for the audience. Yes, with this brief house rule, I would like to start the panel discussion. And my first question would be to Mr. Binay. So as I said, we have this very unfortunate but a popular narrative among the youth. So that so there is no opportunity in Nepal, and that's why, so the youth who choose to stay in Nepal are often asked this unfortunate question, why are you staying in the country? So I was looking through your profile, and you have a very good academic record and the professional record as well. So with this profile, you could thrive anywhere in the world. So, but why do you choose to stay in Nepal? Thank you so much. So first of all, my special thanks to Go Local team for inviting me. So this dates back to probably 2013, 2012, when I finished my HSCV examinations.
So most of my friends were like enrolling into this graduate undergrad program, and then I chose to skip the college part. So I enrolled into charter accountancy course, and then that led me to one definite fact that by the time my friends were graduated, so I had been already engaged with more than 50 organizations at that time. So in form of consulting or auditing or similar kind of activities. So at that time I had some kind of sunk cost fallacy, or I had like invested a lot building this network and then acquiring this experience. So maybe I'll try my fortune here itself. Luckily that has maybe worked out till now. Yeah. But then I don't see any crime in people pursuing their career outside the country as well. Until, obviously they should bring something back to home, and then that makes more meaningful journey for them. On the one hand, on the other hand, so on the opportunity side, so yeah, people who are living in Nepal and then having started their own entrepreneurship journey or having enrolled into some kind of job, their perseverance have led them to have a good set of lifestyle here in Nepal as well. So yeah, we in our organization itself in Khalti, so for example, some software developers who are working for us for 2 to 3 years, so they're getting 6-digit salaries in Nepal as well. So there are lots of opportunities. So that's my hope, and that's what I've been trying to prove staying in Nepal as well. Yeah, thank you. Thank you, Binayji, and I totally support your idea, like, so youth should try to benefit from the globalization, and they should try to, explore and go out there and kind of, try to learn the skills. So, but also like, so as you highlighted, there are opportunities in the countries as well. So with right skills and perseverance, you can thrive in the country as well. So that would be one takeaway I think the youth audience here can take away from you. And my next question would be to Mahesh sir, so who is the member secretary of CTEVT. So if we look into the employment rate of the TVET graduates in Nepal, so it is less than 50%, much lower than the 50%. So on the other hand, if you talk with any industrialist, so they will point out like, the lack of the skills or the human resource is one of the major challenges they are facing. So the TVET is considered as a silver bullet for the employment. So it is also supposed to contribute in reducing the skills gap in the industries. So however, unfortunately, the TVET system in Nepal seems to be less effective in both fronts. So how do you see this issue as a member secretary of CTEVT? And what is your vision to improve on it? Yeah, thank you for your question. The thing is that there are no skilled person that are needed for the industry, so we have to revisit this statement. The thing is that the expectation of the people is very high, so they want to collect everything in a couple of weeks, days, or even in fortnights. So they do not have any perseverance to wait until the final result comes. Another thing is that the industries, especially big industries and MSMEs, they don't want to invest on human resource development. So they are not counting the investment they are making right now. So they are hiring unskilled persons. The efficiency of those unskilled persons in their business is very low. So sometimes it is even less than 50%, and there is high wastage of raw materials and energies while using those unskilled persons in their regular productions. So these are not accounted by those MSMEs and big industries. The thing is that they have to first acknowledge that we have been investing in human resource development, especially skill development needed for our country. The another thing is that people, so there are two popular things in waste management. Everyone like to say that NIMBY, not in my backward.
I don't want to be the first man, I don't want to be the first lady to go for experiments. So I don't want to be the first one to go for skill work. So any other guy will try it, and I will see the result of him or her, then I will try it. This is one thing. And another thing is that there is one very big problem, that who will bail the cat. So I am not the first one to bail the cat. So everyone is looking for another. So another thing is that we have to clearly understand the meaning of Hanuman. So we know our traditional culture. So Hanuman has two distinct, I think, characteristics. One characteristic is loyalty, and another characteristic is the internal strength. We are not acknowledging our internal strength. Especially, we are making our kids very infeeble, very incapable. We are providing our affection to that extent that they are not ready to accept any challenges. That's why the kids, they are not ready to enter into the job market. They are not ready to enter into the local job market. That's why they want to try to go out, and our industry people, our MSMEs, they are not having a skilled person. So the MSME and big industries, they are not getting person because of lack of skill. It's not because of lack of skills, but people do not have any courage. They don't have any passions to work in our localities, in our industries. That's why industries are not getting the adequate persons and the skilled person. And another thing is that our industries, whether big industries or MSMEs, they are not accounting their investment in the human resource development. They are only counting cash. They are not counting the kinds. Cash and kinds both are investments. So big industries and small industries, they have to count that kind and cash in human resource development. And our youths, they have to think about themselves, they have to think about their families, they have to think about their societies, and they have to think about their country. That's all. Thank you so much, sir. And I think you highlighted two very important points. One is the importance of the industries investing in human resource. So we'll get back to that point later also. And also, like, the commitment we need from the youth, so towards themselves, their families, and the societies. So moving on, I'll move to Ms. Najis. So we discussed the skills gap in Nepal. So we are feeling some of the skills gap from India. So to give you an example, like, in the construction sector, a rough estimate shows that around more than 500,000 the construction worker in the Kathmandu Valley alone are from India. So I just wanted to understand or hear from you, how is the skills gap situation in India? So do you also face the skills gap in India? So how the federal government and the state government are addressing this skills gap issues? Thank you so much for giving me this opportunity. First of all, I would like to say that I will prefer to communicate, to talking in Hindi language. Hope you all understand the Hindi. So feel free. Madam. Okay, thank you I so think much. Most of us understand Hindi. Thank you so much. क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं हमारे बारे में, क्योंकि 14 to 15 years गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमने काम किया है. जो स्किल्स गैप की अगर आपकी मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो स्किल्स गैप्स रियली है अभी भी. जो डिमांड है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो डिमांड लेबर तो बहुत है, सप्लाई और लेबर की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह की डिमांड होनी चाहिए, जिस तरह के डिमांड की सप्लाई की ज़रूरत है, वो ज़रूरत फुलफिल नहीं हो पा रही है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात है कि जो लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी है वो एक बिल्कुल पुअर है, जिसके लिए गवर्नमेंट की और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसके लिए बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट्स का आपने सुना भी होगा, इंडिया गवर्नमेंट्स के कौशल विकास करके कार्यक्रम है, जो हमारे प्रधानमंत्री इसको बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, ताकि जो डिमांड्स चीज़ें हैं जो आ रही हैं उसको वो फुलफ़िल कर सकें. कोशिश है हमारी थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग और एक लॉन्ग ट्रेनिंग बच्चों को देने के लिए. हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में काम करते हैं, और जो हमारा एज क्राइटेरिया है, जैसे हमारे पिछले पैनल डिस्कशंस में बात हो रही थी कि हम लोग यंग जो है
अपने आप को कहाँ तक मान रहे हैं। तो इसमें क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने दिया है यूथ की, वो है 15 to 35 ईयर्स। उन बच्चों को हम लोग ट्रेन करवाते हैं, उनके स्किल्स तैयार करते हैं। इसके लिए एक चीज़ सपोर्ट, शायद आप लोगों को सपोर्ट मिल सके। जो कार्यक्रम को जो हम लोगों ने बुना है, जो हम लोगों ने सीरियली किया है, उसके प्रॉपर एसओपी है हमारे यहाँ। जैसे किसी भी यूथ्स को जो बिल्कुल गांव से या बिल्कुल रूरल एरिया से आ रहे हैं, बिल्कुल रफ होते हैं, रॉ होते हैं, तो उनके सिखाने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है। और जो भी स्किल्स की कार्यक्रम चल रहे हैं वो बिल्कुल पार्टनरशिप में काम चलते हैं। तो उनको अलग अलग चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि जो भी बच्चे, उनकी सबसे पहले बिहेवियर चेंज कैसे हो वो देखी जाती है। कि एम्प्लॉयबिलिटी, जो लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी की हमने बात किया, उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है वो बिहेवियर चेंज का है। कि जो बच्चे हैं वो उतना पूरा मेंटली तैयार नहीं होते हैं कि किस तरह का माहौल में वो अडॉप्ट कर सकें, और फिर एम्प्लॉयर जो है उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो उस तरह से जो अलग अलग कार्यक्रम है, जो ट्रेनिंग के जो पूरे पैकेजेस है गवर्नमेंट के, उसमें सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियर चेंज और फिर सब्जेक्टिव्स हम लोग उस पर बात करते हैं, ताकि जो डिमांड है उस तरह से चीज़ों को हम लोग सप्लाई कर सके लेबर को। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. So it's a little bit comforting that, so India also have the skills gap, and you also have the issue around the employability skills. So, but I think we also have a very good takeaways from your initiative. So, one point I particularly like is the importance of providing customized skills. So according to their background and according to their interests and also the capability as well. And you also highlighted the behavioral, the change and the importance of partnership. So thank you so much, ma'am. I'll come back to you again. So, Binay ji again. So I was going through your website, and there I found a very interesting tagline. So in your career page, we are always look out for fresh and talented individuals. So talented individuals make sense. So why fresh? So why not experience? So especially, so because the most of the employers are looking for the experienced one. So, but your tagline says the fresh. Thank you so much for your thorough research, in fact. So, yeah. Khalti is probably very young company in comparison to the sets of impact it has created, or the pool of employee it has now and the turnover it does as of today. So we are running in 8th year as of now. And the fintech industry itself is quite fresh in Nepal. That is one perspective. And then another is we believe in innovation actually in Khalti. So innovation is our core value. So innovativeness is our core culture. So what I believe is that obviously experience count. It doesn't mean that we do not hire the experienced one, but then we preferred fresh mindset and then the fresh things on the table, so that the market dynamics can be met through the innovativeness of the fresh people that we onboarded into our team. And then obviously the market is also getting quite competitive as well. Then we have to have at least 3 or 4 major products or features every year to sustain and then to scale in the market as well. So these things are possible only with these fresh people. That's what we believe in. Yes, thank you. So, I would like to continue with you with another Yes. question as well. It's a, the connected kind of questions. So besides, the fresh and the talented the individuals. So as you mentioned in your tagline also, what kind of traits and skills so you look for while hiring people, and do you find them, the skills in the youth, the potential
personally, I always believe in attitude over skill kind of thing. So the attitude of the people coming in into the team should be right. So the person should be obviously innovative, empathetic, or the person should not have compromise into the integrity or ethical aspects. So that should be the first and foremost lookout for us. And then gradually on the skill set side, obviously a company needs diverse skill set. Obviously on our tech side, the programming language and then other efficiency might matter more. On the financial side, obviously the number game matters most, and on the business and marketing side, so on and so forth. Yeah. So on the skill set side, we always look for openness and agility on the people. So if I hire someone in today in marketing department, and then if the person can switch into the operation department after a year, that can be good for that person as well, and for the company as well. So the agility should be there, and then the openness and the mindset should be always entrepreneurial mindset for us, because we the way we work, it's not total corporate. It's some kind of startup hierarchy kind of thing. So these are the common skills and traits we'll look after. Yeah, thank you. So thank you, Binezi. And the next question would be to Mahesh sir. So Mahesh sir, as Binezi also mentioned, like, what kind of the traits and skills, so the modern work of old is looking for. But again, so when we think of Tibet, so we only think of very conventional kind of occupations, like, the welding, hair cutting, tailoring. So I think, that is also the reason, like, so because it is considered as a very traditional, and, these occupations are often looked down as a very dirty occupations, and some occupations, the people from the poor economic background, so which is why, there is less attractions toward the Tibet. So though, as we discussed earlier, like, there is huge unmet skill demand in the country. So, and I just wanted to know, like, why can't we think of, like, robotic or machine learnings and AI, so when we think of Tibet? Thank you. I will not directly answer your question. The thing is that there is our big traditional thinking is that if we invest on education, that will invite employment. Employment will invite entrepreneurship. That is our traditional way of thinking, and our investment has been there in this line. But I think in vocational education, we have to think it other way around. The thing is that we have to start from the entrepreneurship, enterprising. That enterprising will invite employment, and that employment will demand what kind of skills are necessary for that kind of employment. So I cannot answer what kind of skills we have to deliver. So it may be robotics or other things, but I'm not the right person to answer what kind of skill we need to deliver in our schools and technical schools. The thing is that enterprising agencies, they have to decide what kind of skills, what kind of enterprise they are going to start. So that is the way that we have to start from. Another thing is that I want to answer your question right now correctly, is that we need skills, just fine. Then we need employment, then we need employability. We have been emphasizing on skills only. The boys and girls, they spoke very fluently in English. They were very fluent in Nepali also. So they were very much prepared for their presentation. That is not sufficient. They were skillful, mechanically skillful in their delivery. So were they prepared for working in this kind of working environment? Are you emotionally prepared? Are you familiarly prepared? Are you culturally prepared? So that kind of soft skill, that kind of emotion, we have to teach them. So our culture, our family, our schools, they have to deliver soft skills. So they have to deliver how to communicate with that cultural setup and cross-cultural setup.
So this kind of education we have to start. We always say that, so we have to deliver them hard skills that are very much necessary for the industry, for the job market. That this is not the case. You can learn any skill in 2 weeks, in 3 weeks, in 4 weeks. You can Google it out from it, and you can go use YouTube's and other channels. Then you can find it, and you can know it how to deliver it. The thing is that you have to mentally and you have to emotionally prepare to be there in your work, to be there in your work culture, to be there in your society. Unless you are in your society, in your work environment, your skill doesn't count. So that is my idea. Thank you so much, sir. So for highlighting the importance of soft skill, to thrive in 21st century, so which is the whole of the technology, you also need some the hard skills as well. So I'm moving to Mrs. Nazis. So I was going through the youth policy of India. So it talks very highly of providing the youth in India, so with 21st century skills to thrive in the country and also to benefit from the globalizations. So we just wanted to hear your experience. So what strategy that the federal government and the state government in India are taking so to provide the youth in India with the 21st century skills? सिंपली ये है कि ग्लोबलाइजेशंस 21st के लिए जो चीज़ चल रहा है उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है. सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं कोलैबोरेशंस की, तो कोलैबोरेशंस के साथ काम करना ही ज़रूरी है आज के इस समावेश में. वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए एम्प्लॉयर्स के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी, प्लस वो जो टारगेट्स ग्रुप्स है जो यूथ्स है उनके साथ. तो ये कोलैबोरेशंस का मतलब कि हम सबसे पहले देखें कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिस यूथ्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है. उसके बाद उनका देखना है कि जो भी जिस भी एरिया के हैं, जो भी यूथ्स है, हम ज़्यादातर क्या है उन बच्चों को, जब पेरेंट्स, अगर बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को थोपते हैं कि भाई आपको ये बनना है, आपको वो बनना है. तो पहले तो उनको, उन बच्चों को फ्रीडम देना होगा कि भाई आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है, राइट. तो सबसे पहले कि जिस भी काम में जाए, जिस भी स्किल्स में जाए, उनके इंटरेस्ट को देखने की ज़रूरत है, राइट. एंड कोलैबोरेशंस की मैंने पहले बात की. दूसरी बात है कि जो थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें. ऐसा नहीं कि जो पुराने ढर्रे पे ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहें. तभी आप आगे बढ़ सकते हो जब आप में कोई क्रिएटिविटी हो. ठीक है, एज ए मेंटर हम उसको सिखा रहे हैं तो क्या क्रिएटिविटी उसको सिखा रहे हैं. ठीक है. एंड थर्ड वन इज कि चैलेंजेस, उन बच्चों को हम इस तरह से मेंटरशिप करें कि वो जो नए नए चैलेंजेस है उसको वो एक्सेप्ट कर सके. तो अगर हम भारत के और इंडिया लेवल पे जो स्किल्स की ट्रेनिंग चल रही है, इन बातों को हम लोग बहुत ध्यान देते हैं. जो हम लोगों ने बात की जिस टारगेट्स ग्रुप्स की, उन बच्चों की हम लोग सबसे पहले फील्ड में मोबिलाइजेशंस करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि एक ग्रुप में जाकर के मोबिलाइज करते हैं बच्चों को कि भाई ऐसी ऐसी प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट्स की, आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है. जब मोबिलाइज हो जाते हैं बच्चे इन जनरल वेव की तरह, तो हम लोग फिर उनके साथ 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं. और ये 1-to-1 काउंसलिंग सिर्फ बच्चों के साथ नहीं करते हैं, बल्कि उनके गार्जियंस जो हैं उनके साथ करते हैं. तो जो मैंने आपकी बात की कोलैबोरेशंस की, ये आपको कोलैबोरेशंस यहाँ पे दिख रहा है. क्रिएटिविटी की जो मैंने बात की, तो इसमें आप जब हम लोग देखते हैं कि जो मोबिलाइजेशंस का एक वेग लेवल पे जब हम लोग मोबिलाइज करते हैं, फिर काउंसलिंग पे जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेयर पे बैठ करके बहुत डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक हम फील्ड में ना निकले. तो उस काउंसलिंग से हमें ये मिलता है कि जो गार्जियंस की एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी थिंकिंग है, जो नए, हो सकता है कि हम ये सोचते हैं कि ग्रास रूट लेवल के हैं, वो नई थिंकिंग नहीं ला सकते, वो बच्चे नई थिंकिंग नहीं, तो उनके साथ समावेश करके उस प्रोग्राम में हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं. तो काउंसलिंग इज़ द बेस्ट थिंग्स.
ये काउंसलिंग हम लोग की ग्रास रूट लेवल पे भी होती है। फिर उन शॉर्टलिस्टेड बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर पे भी ला करके कि भाई आप कौन सा स्किल्स जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर उन बच्चों को, क्योंकि अलग अलग हमारे लगभग 100 से 150 ट्रेड्स हैं, जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी है, ब्यूटिशियंस कोर्सेज भी है, फिर आपका बहुत सारे और जो है डेटा आईटी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है डिफाइन किए हुए, और अलग अलग उनके मंथ्स के कोर्सेज हैं, जो छोटे छोटे भी हैं, 3 मंथ्स के, 9 मंथ्स के, 11 मंथ्स के, 4 मंथ्स के। तो उनके अकॉर्डिंग बच्चों को जो अगर इंटरेस्ट होगा, देख सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी ट्रेड में इंटरेस्ट है, तो आप उसको ज़्यादा बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, और एज ए मेंटर, एज ए गार्जियन हम उन बच्चों को बोलेंगे नहीं भैया यही करो, तो उनके पीछे वो ये चीज़ें। फिर आपको ये भी देखना होगा कि जो डिमांड है मार्केट्स में, उसमें जैसे सर ने अभी बताया कि उस लायक हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी देखने की जरूरत है। Okay, thank you. Thank you, madam, for bringing in a very interesting dimension into the discussion, the career guidance. So we talked a lot about, the market demand and the demand for the new skills. So in 21st century, but you also highlighted it's also important to understand the interests of the youth as well. So if they can pursue the vocation, so they have interest, so only they can thrive. So that is a very interesting dimension, and thank you so much for sharing your experience. And to Binayji again, so the technological change is accelerating. So Neil, you are working on the fintech and you understand it better, so it is changing day by day. So how do you think the youth can prepare themselves? So with the the fast changing, the skills demand, so due to the accelerating, the changing in the technology. So do you have any advice to the youth, audience in this room? Thank you. So before answering your question, so I'd like to touch upon your question to my sir before. So on building the workforce ready for some kind of technological disruption, you mentioned machine learning or robotics or something like that. So I have had the privilege to be one of the member of skill sector committee developed under the CTVT as well. So I'm in the IT skill sector committee. So particularly that IT skill sector committee, what IT skill sector committee does is, so we have designed some kind of courses around digital marketing, Android developers or network administrator or something like that. So eventually, so maybe things will turn out from the government side as well. So while we materialize that. So coming on to your questions. So one thing is very clear. So every company is going to be technological company very soon. So that is the fact we cannot deny. So, but this doesn't necessarily mean that everybody should be coder or everybody should pursue on the software development side or pure technological side. But then what I suggest to young people here is, so be aware about the development going around the world. That might be on the blockchain side or AI side or machine learning or whatever the technological disruption that has been happening around the world. And then maybe you can observe the trend as well. So where the future lies. So probably you are in your 18s, 19s or 20s as of now, and then while you reach at the pinnacle of your career at mid 30s or something like that, so what will be the trend at that time that you can forecast after observing that trend going on, obviously. So what we can do is, you can map your interest or map your passion along with the market trends. So you can be, you does not need to be necessarily be tech enthusiast or CTO of every company, but then you can apply that
trend going on into your interest or passion, and then pursue the career eventually. So, for example, myself is a chartered accountant, and I'm leading the fintech company. I does not belong to hardcore technological background, but then, yeah, obviously the companies will need people who can leverage the technology for its output, rather than who can build the technology itself only. So that might be my suggestion for the youth as of now. Yeah, thank you. Thank you, Binayji. Mahesh to Mahesh sir. Mahesh sir, as we discussed, like, you know, the technology is changing, and so likewise the skills demand is also changing. So you highlighted earlier, like, you know, the contribution from the private sector, and, you know, working, you know, partnership with the, as you said, in the productive sector. So how do you think the government and the productive sector can collaborate so to keep up with the, you know, changing demand of the skill? So, and I'm also particularly interested to understand, so do we have any policy framework and incentive mechanism so for the private sector to meaningfully engage in the Tibet sector? Yeah. So before answering to your question, I want to add something. I want to especially suggest to young kids in front of me that you need one interesting skill. That is on-learning skill. That has been pervasively embedded in our mind. Because we are entering into a competitive world where there is no territorial boundary, there is no national boundary. So luckily you are entering into blue ocean. You can Google out what is blue ocean. So that is one vast opportunity. So you need one interesting and important skill, that is on-learning skill and preparation for new skill at any stage of your age. That is the need for 21st century skill. That is, you have to mold you to unlearn what is already there in your mind. I can say the need for 21st century, because we are preparing our workforce for unpredictable job market. Whatever education you have been given today, that may not be suitable for tomorrow because of the advancing technological changes. That is one thing. Another thing is that, so I'm coming back to the question. The thing is that I can say there is almost level playing field for all the stakeholders and partners, especially business, industry, education, and the government. They are working independently. They are not working in collaboration. First and foremost thing is that we have to work in collaboration with each other. And the very important stakeholder, partner, and agency for vocational education, especially in skill development, is big industries and MSMEs. So in our areas, we say private sector. I don't like to use the word private sector. I want to use the word productive sector. In skill development, whoever has direct contribution to production and employment, that is really productive sector, and that is really private sector. So in skill development, you need to work in real working environment. So you have already heard about the 4 terms: education 1, education 2, education 3, and education 4. In education 1, your teacher funnel all the resources to your mind. In education 2, you and your teacher will work collaboratively to find out the new idea. You will construct the idea. In education 3, in all kind of environment, you can learn, whether it is in institute, whether it is in workplace, whether it is in your family, whether it is in your society. In education 4, everyone is teacher. Today you have been here, so we have been doing our side very well. So everyone is teaching others. You are teaching me, I am teaching you. So this is education 4. So we have to be prepared for that. The thing is that what we should go for collaboration among productive sector and government sector, that the thing is that we have to create trustworthy environment among us. That is the need of the hour. So the private sector, they don't believe the government doesn't believe the private sector, similarly education institution doesn't believe the private sector. This is
this is very rampant. The mistrust environment is very much rampant. First of all, we have to create that kind of trustworthy environment so we can work together and we can build together the trustworthy environment. First thing is this one. And for skill development, private sector, especially productive sector, is the leader. They have to lead the skill development sector. We have already heard much about the sector skill committee and other things. So in one country, someone says sector skill committee. In another country, someone says sector skill council. In India, it has been named differently. Whatever name we are giving them, but the thing is that productive sector must lead the skill development field, and that should be properly drafted in our structural bodies, structural institutions. That is the way that we can move forward. So thank you, sir, for highlighting the need for formalizing this, the engagement of the private sector or the productive sector. So in the Tibet system, and I will move to Nazis. So this afternoon we talk a lot about the skill needs that the youth need to develop. So to meet the changing, the skills demand of the modern world. So, but as somebody who have a lot of experience working with the youth and the career guidance, I wanted to know, so do the modern workplace, so meet the aspiration of youth? So do the modern workplace provide them the environment to thrive? देखिए, जो यूथ्स हैं, जो काम करते हैं, इनकी तैयारी के लिए तो हम बहुत सारी स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, लेकिन हमें और जो हम कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर के साथ भी बात करते हैं कि जो चेन है यूथ्स का, वो किस तरह का चेन है। क्योंकि एम्प्लॉयर के पास अगर कोई बच्चे जाते हैं, यूथ जाते हैं, जो जस्ट ट्रेनिंग 3 महीने, ये 6 महीने के लिए, तो एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी लिया है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जिनके साथ, जिनके पास बच्चे काम करते हैं, उनके भी हम लोगों ने एक ओरिएंटेशंस बोल लीजिए कि हमारा जो सप्लाई चेन है, जो मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या है, उनको हम लोग एम्प्लॉयर के सामने डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी लिया है कि जो एम्प्लॉयर्स के पास जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स रहती है, उसको पहले ही हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो बेहतर एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ हम लोग एक नॉन फाइनेंशियल MOU भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी। इससे क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग उन बच्चों को तैयार करवा रहे हैं अंडर द स्किल्स प्रोग्राम। ठीक है, और उनके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन है जो बिल्कुल हाई स्किल्ड बच्चों को चाह रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स अगर पहले हमें बताते हैं कि हमारा क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारी क्या स्किल्स है, उसको हम लोग बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे जो स्किल्स प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट्स के स्किल्स प्रोग्राम्स हैं, मैं आप सभी को बताने में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, या करूँगी, कि हमारे बच्चे सिर्फ इंडिया में ही अलग अलग जगह पे जॉब नहीं कर रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र के, यूपी के, बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जो इंडिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, खास करके स्किल्स प्रोग्राम के ज़रिए। तो जैसे दुबई में, दोहा में, हमारे ऑस्ट्रेलिया में, प्लस जापान में भी अभी तो बच्चे गए हैं। जो बेस है वो ऑब्वियस है, जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उनकी लिटरेसी बहुत ही कमज़ोर रही है बहुत सारे स्टेट्स में, और केरला हमारा उसमें बहुत बेहतर है जो साउथ के हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट्स में चीज़ें पे थोड़ी सी चेंजेस होती है, लेकिन कमोबेश जितने भी स्किल्स के प्रोग्राम है वो अंडर NCDC हो या स्किल्स इंडिया के अंदर हो, तो वो हम कमोबेश सारे क्राइटेरिया एक होते हैं। जो आपने बात की कि काउंसलिंग की बात, तो एम्प्लॉयर के साथ एक टेबल पे बैठने का नतीजा ये होता है कि उनके जो नीड्स हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम फुलफिल कर सके। और हमें उन्हें भी काउंसलिंग करना पड़ता है एम्प्लॉयर्स को, कि जो बच्चे आपके जा रहे हैं बिहार से, जो बच्चे जा रहे हैं यूपी से, जो बच्चे जा रहे हैं महाराष्ट्र से,
उनकी क्या परवरिश है, उनका क्या बेस है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो बिहार के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, जो केरला के बच्चे हैं तो उनके। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम लोग जिसको चैलेंजेस बोल सकते हैं, कि जैसे अगर बिहार, यूपी और बंगाल और इस तरह के उड़ीसा के बच्चे हैं, उनकी प्लेसमेंट जब हम लोग करवाने की कोशिश करते हैं साउथ इंडिया में, तो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके खाने का और उनकी लैंग्वेजेस का। तो जब शुरू के दौर में हम लोगों ने जो 4 साल पूरा अपना ख़त्म कर दिया, उस पर हम लोगों ने फोकस नहीं किया था, क्योंकि काम करते करते एक्सपीरियंस होती है। तो हम लोगों ने फिर उसको, उस चैलेंजेस को कम करने की कोशिश की। तो उसमें अलग अलग हम लोगों ने प्रोवाइड किया कि जो भी एजेंसी, जो भी हमारे ट्रेनिंग एजेंसीज पार्टनर्स हैं, वो वहाँ पे जा कर के अपना छोटा सा MRC टाइप का वहाँ पे डेवलप करते हैं और उन बच्चों को सिंपल जो लोकल लैंग्वेजेस है उसकी ट्रेनिंग देते हैं और जो खान पान है उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। और शुरू के दौर में बच्चों को इस्टेब्लिश करने के लिए जो लोकल फूड होता है, जैसे बिहार के अगर हम लोग हैं तो बिहार के, यूपी, महाराष्ट्र, उन लोकल फूड्स को वहाँ पे हम लोग 1 month 2 months इस तरह से कैरी करवाते हैं। देन फिर वो उनकी आदत लग जाती है। सपोज डोसा और इडली खाने की नहीं आदत है उनको, जस्ट डेली बिहार और यूपी इस तरह के क्षेत्र को, तो उनको फिर हम लोगों ने कैसे उसको डेवलप करना, उनको सिखाते कि भैया एक्सपोजर है, हर चीज़ में एक्सपोजर, आप ये तो सीखे हुए, ये नहीं सीखे तो इसको सीखने की ज़रूरत है। तो ये बहुत कामगार होता है इस चीज़ों को लेकर के। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. So, it's important, like, to providing the youth with the skills that the industries need. So, but it's also equally important that industries also provide the environment. So for the youth to really kind of, able to unleash their potential. So thank you so much for sharing your experience. So we have a lot of takeaways from your experience. So with this, I would like to thank all the panelists for their wonderful insight. I'm out of questions. So, and I think we still have 5 minutes for the question answer round. So we can take, I think, maximum 2 questions from the floor. Yes, and I would like to request the volunteers to help with the mics. हजुरले अघि जस्तै नेपालमा नि हामीले के गर्न सक्छौँ, विदेश किन जाने, इन्सेन्टिभ के हो भनेर सोध्नु भएको थियो होइन। लाइक आई अग्री अन द्याट, नेपालमा नि हामीले विथ करेक्ट माइन्डसेट एन्ड एक्सन होइन वर्ल्डको जहाँ पनि हामीले अचिभ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तर कुरा के भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि कुरा आउँछ कि जस्तै इफ आइम रियली प्यासनेट अबाउट बायोलोजी अर से एस्ट्रोनोमी होइन, नेपालमा के छ त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट आई स्टे हेयर क्या, रिसर्चको बारेमा के छ। जस्तै इन्डियामा त एटलिस्ट वी हेभ इसरो एन्ड स्टफ लाइक द्याट होइन, अलरेडी एउटा बेस लेभलको होइन कुरा छ। नेपालमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क एउटा त्यो हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट छ। अब इक्जाम्पलकै रूपमा से फेसबुक इफ नेपालमा कसरी स्टार्ट गरे है, डु यु थिङ्क त्यो लेभलमा पुग्थ्यो होला? त्यतिको लज हुन्छ नि, त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीसँग छ त? लाइक ल फेसबुक त एकदम हाई लेभल, एकदम ठुलो कुरा भयो होइन, एउटा एउटा खतरा लेभलको कुरा गर्नु पऱ्यो भने पनि कतिको चाहिँ भाएबल छ त हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्ट, यो लजहरू सबै कुरा हेरेर। सो यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्ने होला, हामीले आफ्नो देशमा कसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाउने, अनि जो युथलाई चाहिँ आफ्नो प्यासन हुन्छ नि एउटा रिसर्च ओरिएन्टेड कुरामा जान मन छ भने चाहिँ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ हल्का यसको बारेमा भन्दैन। थ्याङ्क यू। हुन्छ, यो क्वेसन कसलाई होला भाइ? कोही पर्टिकुलर प्यानलिस्टलाई हो कि जसले जस्तै हो नि हुन्छ? त महेश सरलाई सोध्नुपर्ने। So, thank you. YouTube, I was looking for the YouTubes, and there were 3 terminologies: energy, time, and money. You are young, you are only looking for money, you have sufficient time, you have sufficient energy. So while you grow up, your priority changes. So in your age, I was also thinking that I have to fly away from the here. So this is not the right place. But I'm at the age of 50. So I love my country. Not because that I'm here, because I love my culture, I love my society. This is my preference. This may not be your preference. So that's why we have to plan for that. We have to think for that. Your family, your father, your parents will be here. You will be proud to be. You are from this society, you are from this culture. So yes, you are young. Whatever you are saying, you are right. I don't say you are wrong. But you have to think
for tomorrow. You have to think for your offsprings. Now you are kids of your parents. Then you have to think about your kids. If your kids goes away from this country, what kind of behavior they will face? Will they treat equal behavior to the native citizens over there? Or they will feel otherwise. So you in this age, you have high energy, you have sufficient time. Only thing is that you don't have money. Your parents' money is not yours. So that's why you are talking like this. But we have to think for tomorrow, we have to think for our offsprings. So we have to think about our peace of mind in our old age. So that's I want to add. Vinayji, would you like to add? So obviously agreed with Mahesh sir. So you can always, if you want something to be done, you can always there's lots of opportunities. अहिले त पहिला जस्तो छैन नि, स्कुलमा गएर पढ्नुपर्छ, स्कुलमै गएर रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन. डिजिटाइजेसन छ र you can see other way around जस्तो लाग्छ यो कुरा चाहिँ मलाई हैन. If there is no research center, it's opportunity for you to build that हैन. बाहिर गएर आएर सिकेर बिल्ड गर्दा हुन्छ. अनि बाहिर जानुमा मैले अघि पनि के भने भन्दाखेरि बाहिर गएर सिकेर आउने हो भने बाहिर जानुमा रङ छैन. तर हाम्रो एस्पिरेसन के हो त हैन. आई सी लट्स अफ पिपल लिभिङ जब राम्रै भइरहेको ठाउँमा पनि किन भन्दाखेरि जस्ट टु स्केप दिस कन्ट्री हैन. त्यति हरिबल पनि भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ. र बनाउने मान्छे नै सबै स्किप गर्ने हो भने त फेरि यहाँ किन बस्नु हैन. को बस्ने, कसको लागि बस्ने भन्ने पनि होला. अनि अर्को कुरा भनेको इभेन्चुअली नेपालको रेगुलेसन्स अथवा चाहिँ भनौँ न ब्युरोक्रेसी अथवा अरू कुराहरू अभियसली देयर आर सम प्रब्लम. तर देयर आर लट्स अफ इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ एकदम हेल्प गरेर इनिसिएटिभ लिएर कामहरू अगाडि बढाइराखेको पनि छ. किन भन्दाखेरि तपाईँ अब यो एजमा हुनुहुन्छ, अभियसली तपाईँ धेरै इन्स्टिट्युसनमा दौडिसक्नु भएको छैन क्या. त्यो एउटा पर्सेप्सन बनाइसक्नु भयो, तपाईँले नोसन बनाइसक्नु भयो क्या. प्रिकन्सिभ नोसन भन्छौँ नि हामी. यहाँ गयो भने त यो होला, यहाँ गयो भने त यो होला भनेर हामीले अलरेडी माइन्डमा बनाइसक्यौँ. तर त्यो नहुन सक्छ क्या. रियालिटी माइट बी डिफ्रेन्ट हैन. सो अर्को कुरा म आफ्नै पनि हेर्छु. म बाहिर गए भए के हुन्थ्यो होला त हैन. ठिक छ, मोनिटरी वाइज समथिङ वेल अफ हुन्थ्यो होला. तर यो अपर्च्युनिटी त आज आउँदैन थियो होला हैन. सो अर्को 300 जनालाई चाहिँ जब दिने अपर्च्युनिटी त आउँदैन थियो होला हैन. र अर्को चाहिँ 40 लाख जनालाई चाहिँ एक्सेस टु फाइनेन्स दिने अपर्च्युनिटी त आउँदैन थियो होला हैन. थ्याङ्क यू. So I think हेलो, मेरो नाम चाहिँ विशाल केसी. अनि भाइ एक केस हामी कहाँ छौँ? No, Should I because start? Nazis also want to add on the previous point, so quickly. नेपाली भाषा की यूज़ हो रही थी, लेकिन फेस एक्सप्रेशंस में जितना चीज़ों को मैंने समझा, मैं इन सभी बच्चों को जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि गार्जियंस या मेंटर्स सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए, राइट, आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आपको मोटिवेट खुद को करना है कि हमें किस वे में जाना है. और आपको बता सकता है, कहते हैं ना कि मछली पकड़ के आपको सिर्फ देना काम नहीं, मछली पकड़ना सिखाना ये इम्पॉर्टेंट है. तो आपको सीखना, जो लर्निंग एटीट्यूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और जो आप सभी बच्चों में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो ईगो है ना, वो ईगो को बिल्कुल हटा के चलना है, तभी आप सक्सेस कर सकते हो. ऑनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको साथ लेके चल सकते हो, तभी आप सक्सेस हो सकते हो. और जो आपने बात रखने का जो सलीका है, जो बात रखने का जो तरीका है अपने मेंटर्स के साथ, वो तरीका सीखना होगा. बहुत हर्डल्स लाइफ में मिलेंगे. अभी आपने जीवन की शुरुआत की है, अभी लाइफ की शुरुआत की है, बहुत हर्डल्स मिलेंगे. आप सब में आपको लगेगा कि मुझ में ही सबसे कमी, इन्होंने ये कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया. लेकिन आप देखेंगे जो उस लेवल पे बैठा हुआ है, उसने भी कुछ नहीं, उसको भी कोई किसी ने कुछ नहीं किया. जो भी लोग आज आगे बढ़ा है, जो सबसे ऊंचाई पे है, वो अबुल कलाम हो, राजेंद्र प्रसाद हो,
आपके देश के जो प्रधानमंत्री हों या जो बड़े बड़े लोग हैं आपके, जो आपके पैनल डिस्कशन में भी बहुत सारे लोग हैं, इनकी ये आगे बढ़ने का सबसे मेन मूल मंत्र है सेल्फ मोटिवेशन एंड लर्निंग एटीट्यूड। तो प्लीज़ इसको आप पकड़ के रखें, ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू। I think we can take one question. Okay, my name is Vishal Keshi. I am currently pursuing bachelor's degree. अनि मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ ब्याचलर्स पढिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ पढाइबाटै फुर्सद छैन अथवा चाहिँ मार्केटमा र पढाइको बिचमा ग्याप हुन्छ त्यो एकदमै ठुलो खाडल नै छ क्या। लाइक देयर इज ह्युज ग्याप बिट्विन वाट वी आर प्र्याक्टिसिङ इन मार्केट एन्ड वाट यु आर स्टडिङ इन कलेज। अनि लाइक कम्पनीज जस्तै लिपफ्रगहरूले चाहिँ यो उस्तो यो चिजहरू चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स गर्नको लागि स्टुडेन्ट पार्टनर्स प्रोग्राम पनि रन गरिरहेको हुन्छ, लाइक अरू फेलोसिप इन्जिनियरिङ फेलोसिप प्रोग्रामहरू। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो खलि त्यसो केही गरिरहेको छ कि गर्ने प्लानमा छ। अनि हाम्रो गभर्मेन्ट बडिजहरूले चाहिँ यो चिजहरू सब चिज फुलफिल गर्नको लागि अथवा चाहिँ कलेजहरूमा जुन मार्केटमा प्र्याक्टिस भइरहेको कुराहरूलाई अलाइन गर्नको लागि के कस्तो पोलिसिजहरू लिइरहेको छ अनि हामी आफै स्टुडेन्टले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी फिल गर्न सक्छौँ? मेरो क्वेसन चाहिँ यही नै हो। थ्याङ्क यू। खल्तीको पार्टको म एन्सर दिन्छु त्यसपछि सरलाई। सो लकिली हिजो एउटा एक्जामिनेसन थियो आइओईमा पुल्चोकमा, अप्लाइड फिनटेकको इलेक्टिभ कोर्सको। द्याट वाज द फर्स्ट टाइम इन नेपाल। त्यो कोर्स खल्तीले डिजाइन गरेको थियो। 15 जना त्यहाँको अन्डर ग्रेड्सको स्टुडेन्टहरूलाई हामीले नै मेन्टरिङ गरेको थियौँ। सो द्याट इज जस्ट द बिगिनिङ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा गऱ्यौँ हामीले। र अर्को भनेको दुईवटा एस्पेक्टमा काम हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ त्यो मान्छेको एटिट्युडमा पनि फरक पर्छ। कतिपय केसेसमा देयर आर लट्स अफ पिपल जुन चाहिँ लेबर लले चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई काम नगराउनु भनेर भन्छ। देयर आर लट्स अफ प्यासनेट पिपल जो चाहिँ काम गर्छु म दाइ एज अ इन्टर्न भने पनि गर्छु भनेर पनि हाम्रोमा आइरहनु भएको हुन्छ। त्यो हाम्रो लिगल सिस्टमले गर्दाखेरि कतिपय केसेसहरूमा उहाँहरूलाई हामीले इनरोल गर्न मिल्दैन। र देयर आर सर्टेन पिपल जो चाहिँ 20s पनि नभइसकिकन पनि खल्तीमा इनरोल भइसक्नु भएको पनि छ। दे आर पर्स्युइङ देयर एजुकेसन एज वेल प्यारलली। त्यो एस्पेक्टमा पनि हामी काम गरिरहेछौँ। अब हाम्रो मिडियन एज नै इट्स 26 हो। 300 जनाको एभरेज एज निकाल्यो भने 26 हो। सो त्यो भनेपछि हाम्रो एज ग्रुप नै अलिकति युथ ओरिएन्टेड र युथ सेन्ट्रिक छ। र भनौँ न त्यो आइओईको जस्तो मैले एक्जाम्पल दिएँ। अर्को अब कलेजहरूसँग पनि हामीले प्लेसमेन्टको एग्रिमेन्टहरू पनि मेजोरिटी मोर देन 10 कलेजेसहरूसँग गरेका छौँ। त्यो पनि छ। र अर्को चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि अब हाम्रो स्केल त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैन। हाम्रो जोहो भन्ने कम्पनी छ इन्डियामा। सो जोहो भन्ने कम्पनीको एकचोटि केस स्टडी तपाईँहरू सबैले हेर्नुहोस्। द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन। जोहोले चाहिँ आफ्नो वर्कफोर्स चाहिँ आफैले प्रोड्युस गर्छ र इमिडिएटली त्यो पनि +2 पास गरिसकेपछि सिधै लिन्छ अथवा चाहिँ नि +2 पनि नगरे पनि हुन्छ त्यहाँ हैन। तर दे आर अर्निङ वेल, दे आर रेप्युटेड हैन, दे आर $1 बिलियन कम्पनी, ग्लोबल कम्पनी हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भनौँ न कोर एजुकेसनल स्ट्रेन्थ मात्रै हेरेर हायरिङ गर्ने भन्ने चाहिँ मेजोरिटी यो न्यू टेक कम्पनीहरूमा अथवा चाहिँ यो सेक्टर। थ्याङ्क यू। Okay, I think we can take one more question. So that would be a final question. Thank you, everyone. So I'm one of the among of the जुन युथहरू छन् हैन, त्यसको म पनि एउटा फ्रस्ट्रेटेड युथ नै भनौँ हैन। मेरो फ्रस्ट्रेसन के छ भन्दाखेरि हजुरले जुन भन्नुभयो कि देयर इज many new companies that are taking youths, तर there are companies in Nepal that are scamming youths. अब के छ कि म ब्याचलर्स कम्प्लिट गरेँ अनि तर मैले पेमेन्ट चाहिँ लाइक हुन्छ मेरो जुन कम्पनसेसन छ एकदम थोरै छ, प्लस म जब गर्न चाहिरहेको छु तर त्यसको क्वालिफिकेसन नै धेरै मागिरहेछ हैन। अनि लेबर लले भन्छ 15,000 भन्दा तलब मिल्दैन तलब हैन, तर 12,000 मै पैसा दिइरहेछन् हैन, 10,000 मै दिइरहेछ। अब हामीले त भन्न मिल्दैन यु आर इन द टप क्लबहरू हैन। सो इट्स आई बिलिभ इट्स काइन्ड अफ हाम्रो जब त छँदैछ टु टेक दिस थिङ टु यो, बट आई बिलिभ इफ यु कुड यु नो टेक दिस टु लाइक ओके जुन यो हाम्रो ल छ लेबर ल त्यसको रेस्पेक्टमा कम्पनसेसन चाहिँ फेयर होस्
एन्ड कम्पन्सेसनसँगै वर्क इन्भाइरोमेन्ट पनि इट्स नट लाइक कि 9 to 5 भयो तर आई वान्ट मोर भनेर कम्पनीले भन्छ त्यो वर्क आवर पछि पनि के अरू कुरा महेश सरलाई मैले भन्न चाहन्छु लाइक उहाँले इम्प्लोएबिलिटीको कुरा निकाल्नु भयो इम्प्लोएबिलिटीमा गुड हामीलाई धेरै इम्प्लोय चाहियो किनभने हामीसँग युथ छन् तर कसैले हायर गरिरहेको छैन लिमिटेड मात्र छ तर त्यसको लागि देयर इज नो गुड पोलिसिज देयर नो ट्याक्स रिबेट फर एन्टरप्रेनर्स लाइक मी हु वान्ट टु बी एन एन्टरप्रेनर फर ट्याक्स रिबेट छैन होइन त्यसमा एफडिआई पनि आइरहेको छैन नेपालमा त्यस्तो खासै लाइक बिजनेस सेक्टरमा अरूमा आउला आई डु नट नो अबाउट इट तर त्यसको लागि पनि हुन्छ नि अब यति धेरै कुरा चलिरहेछ एन्ड आई काइन्ड अफ फेल्ट अफ पर्सनल कुरा पनि किनभने म आफै युएस गइरहेको छु फलमा सो म आफै यस्तो फ्रस्ट्रेटेड भएर बाहिर जानु परिरहेछ कि सो आई हेभ टु टेक दिस होल थिङ्किङ लाइक थट आउट अफ द माई माइन्ड एन्ड आस्क द क्वेसन्स वाइ एभ्री टाइम वी आर सेयिङ दिस ल यो गर्छौँ तर एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन कहिले भएको छैन कि कहिले भएकै छैन सो So, I want to go back to the former question I would like to say. के छ भने मान्छेहरूको 16 किसिमको पर्सनालिटी हुन्छ साइकोलोजीमा 16 किसिमको पर्सनालिटी हुन्छ त्यही 16 किसिमको पर्सनालिटीलाई असिस गरेर कुन चाहिँ स्किल कुन चाहिँ ट्रेड के अरे पर्सनालिटी र ट्रेड एउटै कुरा हो कुन चाहिँ ट्रेड उसलाई उपयुक्त भनेर बताउने कुरालाई हामीले करियर काउन्सिलिङ करियर गाइडेन्स भन्छौँ होइन The thing is that we have not gone through that career counseling and career guidance. You have been forced by your parents, your peers to go for a particular education that may be sellable in the market or not. You are unsure. The first thing is this one. Another thing is that I was principal of Balaju School of Engineering and Technology. There were 3 trades. One was sanitation, another was mechanical, and another was electrical. In sanitation, the graduate from the sanitation department, they were paid high. So they even earned, I think, around 100,000, more than 50,000 per month, almost 20 years back. So today, 50,000, more than 50,000 is nothing, but 20 years back, it is huge sum of money. And those guys and those girls, they were reluctant to work in that plumbing section because so they went to door campaign. They rang the bell, and the kids replied, "Mamu, gate खोलिदिनुस्, toilet बनाउने दाइ आउनुभयो." You know what I'm saying? Mamu, gate खोलिदिनुस्, toilet बनाउने दाइ आउनुभयो. हैन? त्यसपछि they were not ready to listen to accept those words. That's why they left the plumbing job. So the thing is that we don't want to work in the areas where it is highly paid. So we want to go for white collar job. We want to abuse our authority. We don't want to use our expertise, but we want to be the great person, ठुलो मान्छे, while we are very much interested to abusing our authorities, not using our expertise. That is the main problem. So, and the thing is that I want to recall once again, the first presentation was by one lady. It was very excellent presentation. If you presented that presentation in a formative way, that is best research. Research is not a big deal. So research is not that the only university professors can do. If you explain those kind of things you explain in this hall, if that was formatted in a standard way, that is research. So we are thinking that it's a big deal. So in our skill development sector, we have to use the word development, not the research. That is for non-skill or I can say technical words. So we have to rely on our development work. That is research. That is happening around our society, around our culture. So it's not only academia sector, it's not only the university room activity. So that's all I want to add. Thank you, sir. Thank you so much भाइहरूलाई पनि अलिअलि फ्रस्ट्रेसन पनि देखियो
विच मेक सेन्स। तर अर्को कुरा चाहिँ आजको हामीले जुन 1 घन्टा जति डिस्कसन गऱ्यौँ त्यसबाट च्यालेन्जेस छन् भन्ने कुरा त द्याट इज इस्टाब्लिस, तर अपर्च्युनिटिजहरू पनि छन्। र अघि हामीले केस स्टडी पनि सुन्यौँ र मलाई यो आशिषजीले हिजो अस्ति एउटा भन्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई खुद स्ट्राइक गरेको थियो। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ केस स्टडिजहरू जुन पढ्छौँ नि त्यो जहिले पनि बाहिरको केस स्टडिज पढ्छौँ। सो वी एस्पायर टु बी लाइक मार्क जोगरबर्ग होइन, त्यसको लागि त अमेरिकै जानु पऱ्यो होइन। तर हामीले चाहिँ यता चाहिँ विनयहरू देखाएको छैनौँ होइन। र अब आजको एउटा मैले टेक वे, सो वी हेभ विनय अल्सो, यु क्यान एस्पायर टु बी विनय विदिन द कन्ट्री होइन। अब च्यालेन्जेस छन् र अब तर त्यसलाई चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ युथहरूको पनि एक खालको जिम्मेवारी चाहिँ छ है। र खालि चाहिँ अब गभर्मेन्टलाई सिस्टमलाई मात्र दोष दिएर त भएन नि त होइन। त्यसले गर्दा हामीले त्यसमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा। र अघि अर्को सरले राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो होइन, हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी पनि छन् है, आफूप्रतिको पनि होला, आफ्नो सोसाइटीप्रतिको जिम्मेवारीको पनि कुराहरू होला, त्यो पनि हेर्नु पर्ला। तर अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले अब त प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा पनि आज डिस्कस भयो। With this, I would like to thank the panelists for the wonderful insight and everybody here so for participating in the discussion. Thank you so much.